एस्टोनिया में ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। हम लोग वहाँ पे थे, ऊपर से देख रहे थे, और अभी हम जा रहे हैं फिश मार्केट। ये एक और जगह है जहाँ से पूरी सिटी दिखती है। व्यू बड़ा अच्छा है। अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, टाइम हो गया अराउंड 12, और अभी चेकआउट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे क्रूज़ के लिए। एक्चुअली आज घूमने का ऐसा कुछ प्लान नहीं है, कल एक्चुअली सब कुछ कवर कर लिया था, तो अभी बस निकलते हैं खा के हेलसिंकी के लिए। ऐसा कुछ नज़ारा है। अभी हम लोग हैं 8th फ्लोर पे। नज़ारा क्लासिक है। आपने जो सब टाइम लैप्स देखे, कुछ मेरे रूम से और कुछ यहाँ से। City looks beautiful. See you. Okay, so now we are 4 person. One will be stay here for like 2 more days. ब्रेकफास्ट हो गया, अभी जा रहे हैं क्रूज़ के लिए। वेदर अच्छा हो गया, सनलाइट आ रही है फिर से। ब्रेकफास्ट में चॉकलेट खा लो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा खाने से पेट भर गया। बट अभी वॉक करके जा रहे हैं, 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, जहाँ से क्रूज़ लेना है। एयरपोर्ट टाइप ही है वो। तो अभी हम लोग 4 पर्सन है, वो एक बंदा 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकेगा यहाँ पे, कुछ कॉन्फ्रेंस है और थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। बट अभी हम लोग जा रहे हैं 4 बंदे। एंड ही इज सेलिंग, ही इज़ फ्रॉम चाइना एंड he just started his postdoc, and we have 2 more person. They are like one from UK doing postdoc and one is from Italy, and he's like an intern student for like 6 months in Australia. So yeah, it was a nice trip. So now back to Helsinki. फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जब भी एंटर करोगे तो आपको चेक इन करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या सेल्फ चेक इन भी कर सकते हैं, या ये जो काउंटर होते हैं इन पर कर सकते हैं। आपको जस्ट पासपोर्ट दिखाना है और अपना वीज़ा दिखाना है और टिकट दिखाना है, दैट्स इट। So I just realized that I forgot to introduce my friend. He's Jess. He's from UK and he's doing postdoc, and we have like same boss. And that one is Patrick. He's from Italy and he's like an exchange student. He's doing his PhD, and we have like same boss. And one person is Siling. It's meeting now.
So that is the place in Helsinki where you will get this cruise. Now we are going for the bus. Like we have like 1.5 hours, so we will walk, and it will take like around 15 or 20 minutes from this place to the bus stand. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना भूल गया कि लोग इस्टोनिया में, तालीन में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे जो अल्कोहल है बहुत सस्ता मिलता है. मतलब फिनलैंड के कंपेरिजन में आई थिंक हाफ रेट पे मिलता है. इसलिए लोग जाते हैं, 2-3 दिन का हॉलीडे बनाते हैं, आराम से अच्छी खासी लेके आ सकते हैं. टाइम हो गया 4:45. अभी हेलसिंकी बस स्टैंड पे जा रहे हैं. वास्केला के लिए 3.5 आवर की जर्नी है बाय बस. अगर आपने हेलसिंकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिलेंगे. देखो, मिलते हैं वास्केला में. सो फाइनली वी आर बैक इन वास्केला. टेम्परेचर -8 डिग्री. आई होप यू एंजॉय दिस इस्टोनिया ट्रिप. अगर मज़ा आया तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. एंड ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था. 3 दिन का ट्रैवल था. आप बजट में ट्रैवल कर सकते हैं. अगर आप काउ सर्फिंग वगैरह करते हैं तो हम लोग होटल में रुके थे, इसकी वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा. बट खाना, ड्रिंक्स और ये सब इतना एक्सपेंसिव नहीं है. तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं. अच्छी जगह घूमने के लिए 2 या 3 दिन का प्लान बनाओ, अच्छे से सिटी को एक्सप्लोर करो. तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सिटी में. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो. नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, दबा दो, सब्सक्राइब हो जाओ. नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दो ताकि नई वीडियो आएगी तब आपको पता चल जाएगा. तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ. बाय बाय.